हुआ है, कंबल है। अच्छा चलिए आते हैं, आई थिंक लाइव हो गए हैं, सो विल स्टार्ट दैट। नमस्कार, आज 18 दिसंबर 2022 संडे के दिन हमारी डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स हैं डॉक्टर KK अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं, डॉक्टर KK अग्रवाल पे, उन सबका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम दिल्ली में और NCR में बहुत जगह ऐसा फेस कर रहे हैं कि अब वेरी हायर एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली जो पार्टिकुलर मैटर का, उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट अभी रिसेंट में वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा रिलीज हुई है। तो आज का टाइटल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट 2022 on striving for clean air pollution and public health in South Asia. This recently released जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट है, it says that South Asia suffer from extreme air pollution. We all know that particularly this region, and 9 out of the world जो 10 cities हैं, they are in this region, and they having the worst air pollution. So जो 9 out of 10 जो है इसी region में है वर्ल्ड के, जो that was the. So it's very very important coordinated report released by World Bank Group. This report used a modeling approach over entire South Asian region and laid out multiple scenarios and the cost involved in reducing the South Asian exposure to the particulate matter. Actually, entire report they have given the cost for reduction that and the cost for non taking actions, how much the environmental cost or damaging cost to the public health we are doing that. As per report, this over 60% of the South Asian exposed to a average 35 microgram per meter cube of the PM 2.5 annually. This is the average sometime, but particularly in the some part of this our Indo-Gangetic plain, where in Delhi, like it stayed spike up to as much as 100 microgram, and sometime in a smog-like condition is 400 plus microgram per meter cube. Like in these days also sometime. So nearly this is the, if you take 100 microgram also the higher limit, is 20 times the upper limit of the this 5 microgram per meter cube recommended by the WHO. Recently recommended the 5 microgram. So even the 100 microgram, it is the 20 times higher. And if you take the current sometime 400 plus 400 microgram per meter cube, so it means 80 times higher than the recommended WHO limit. That. And India, as per report, India has 6 airshed, where is between which the air pollutants move, and the sum of the airshed is shared with Pakistan also. That way. So air pollution, this as per report, caused an estimated 2 million premature death in South Asian region each year, and incur significant economic cost. That was. We say the economic cost both in terms of the public health, manpower, environmental cost. So this is very, very huge economic cost that was there. The report says, whilst the particularly the existing measures by the government authority can reduce particular matter, but the significant reduction is possible only if the airshed approach is adopted. This is the after the Delhi when we working together with the all government agencies, this the point was raised in the Ministry of Environment meeting by the Delhi government sometime back in the I think 2012-13, that this particular higher PM 2.5 issue was raised, and then their airshed approach was the raised in that meeting. So this is not a very new phenomenon, that airshed. So this is the airshed approach is adopted, and coordinated policy and programs are implemented. Unless these are the not very coordinated approaches taken, it's not possible to reduce significantly that way. So just like the NCAP program, the Ministry of Environment Forest has the taken measures for the National Clean Air Program, when the about 131 Indian cities are the part of that program, and they have been given the target to reduce
up to sometime 30 to 40% the particulate matter. In India, earlier Delhi was in the focus, I can say that. But in terms of the highest particulate matter, particularly PM 2.5. But recent monitoring data shows many cities in Bihar have been higher particulate matter than Delhi. अभी मैं आज का समीर जो ऐप है CPCB का मैं देख रहा था, तो दिल्ली का जो है 11 बजे का बुलेटिन, अभी 11 बजे का जो समीर का डेटा है, तो दिल्ली का PM 2.5 ये 324 है, बट बेगूसराय 465, दरभंगा 446, कटिहार 448, पूर्णिया 426, Siwan 444. So this very higher air pollution in the Bihar region. So maybe this is a part of the Indo-Gangetic Plain. This is the, so I think this is one of the reasons, because this is becoming a settling ground for the pollutants after when the wind is north westerly that way. So these are the various issues we'll discuss in this meeting. So I think पार्थो त्यागी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, बस इनिशियल जो है बाद में समराइज करके देन वी कैन पॉइंट आउट, बट इनिशियल कमेंट्स मैं सर से चाहूंगा, बिकॉज ही इज द इनके जो इनका एक्सपोजर है, बिकॉज CPCB में जो ये प्लान प्रोग्राम स्टार्ट करे, ही वाज द सेकंड चेयरमैन इन CPCB, तो जितना एक्सपोजर सर को है उतना शायद हम में से किसी को भी और ना भी पॉसिबिलिटी है जितना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियल रिमार्क के साथ then we'll request him to his the final comment. Over to Partho Tyagi sir. Thank you, Dr. Anil Kumar. I am not very well informed. I have yet to go through that World Bank report. You have summarized it in the beginning, telling us, which we already know, that these are very highly polluted region. Anybody who has traveled by air and has landed in Delhi during daytime has seen as if he is entering a bowl of dust. But what I feel is that air pollution has now concentrated only on particulate matter, and that too fine particulates. And limiting it to that, with so many changes occurring in industry elsewhere, in which and also automobiles, from which a lot of other kinds of pollutants emerge and are quite harmful to health also, will actually divert the focus from health to a single parameter. So that, I think, is a risk in planning a program to control air pollution. Second is that now and then there is an effort that there will be a tower, air purifier tower, and it will clean an area of 2 square kilometers or this or that, which to my mind, this has been discussed several times by others also, that is a very expensive and very futile, ineffective method of trying to control pollution. Investment may better be made at the point where the pollution occurs, at the source, rather than let it come in the air and then treat the air. So that strategy must be very carefully adhered to tackle the source. And in tackling the source, there can be alternative technologies, particularly in case of automobiles, and also in case of construction works. The more the precast units are used, the less will be the air pollution. And that way, I think through technology, try to reduce or try to avoid pollution will be a much more successful approach than trying to tackle at the stack or after the stack. This is all that I wanted to say. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Definitely, your blessing is always with our group, this group, and we'll try to whatever we can, and though definitely this is the mostly government measures, we can also have a kind of suggestions and from that.
So thank you, sir. Now I'll request Dr. Sanjeev Agrawal ji, who work in the area for so many years, both in the air pollution and water pollution. He was the additional director in CPCB. So I'll request Dr. Sanjeev Agrawal. So particularly your views, your the expertise, whatever you have on this topic. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you very much. First of all, I will whatever that Tyagi Saab has mentioned right now, very well explained and very well said, because I fully agree with the Tyagi Saab ने जो अभी बात कही है, that that is very very important. We are concentrating first that only on fine particulate matter, but I think we should also look for that the gaseous pollutants which are coming out from various sources, because that is basically converting into the secondary aerosol, and which is again forming the particulate matter. So we are not looking into that secondary aerosol. First thing I just want to mention that this particular work I have started during the time of Tyagi Saab also, that I was involved in the National Ambient Air Quality Monitoring Program in 1980s. तो त्यागी साहब के टाइम पे मैं शायद गया था, आगरा भी पोस्टेड हुआ था, वहां पे भी बड़ी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, और अब तो पूरे इंडिया में बढ़ गई है. बट मेजर थिंग इज दैट we are concentrating, I was concentrating since 2010 more on the NCR region, not only Delhi. Actually, what we have found that कि हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, but हमने जब NCR की स्टडी की, we found that the 60% pollution is coming from the other cities of the just adjacent to Delhi. तो दिल्ली का पोल्यूशन अगर 40% है, तो 60% पोल्यूशन फ्रॉम एयरशेड की बात माने अगर बोले तो, so I think that is coming from the other cities. Ghaziabad is heavily polluted, other cities also very very polluted. So ये कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली ही polluted है, but पूरा NCR ही polluted है. और इसमें NCR पे डॉक्टर अनिल कुमार जी के साथ मैंने काम किया काफी. दिल्ली के साथ साथ हमने वेरियस स्टेट्स को बुला के और काफी मशक्कत की थी, बहुत हमने एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी. अभी भी चल रहा है वो, और एमकेएफ भी शुरू किया बाद में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिगार्डिंग दैट रिपोर्ट, आई जस्ट वांट टू मेंशन कि ये रिपोर्ट एकदम ठीक है, और व्हाटएवर जब अभी तो मैंने पूरा भी इसको ठीक से देखा नहीं है, बट मैंने जो देखा रफली एकदम मैं बता सकता हूँ कि ये 3 फेज की रिपोर्ट बनाई गई है, कॉस्ट एनालिसिस की गई है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की गई है, और उसमें आई थिंक 3 phase report, and there are total 9 steps are there. So it is very well explained there in the report कि जो बातें हमने शुरू से करते आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, जैसे source apportionment studies and other things, we have to look into that. So this is very important, क्योंकि अगर हम सिर्फ फाइन पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 के बेस पे, जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका ज्यादा वेटेज दिया गया है PM 2.5 के ऊपर, बट आई थिंक वी हैव नॉट गिवन मच वेटेज इन द AQI, द गैसियस पार्ट, विच इज बेसिकली अल्टीमेटली इन द लोअर एटमॉस्फेयर एक केमिकल रिएक्शन होता है और फिर सेकेंडरी एरोसोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में बन जाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ द एटमॉस्फेयर. और सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडीज तो आपकी कई बार हो चुकी हैं, एंड आई थिंक अगेन वी आर डूइंग इट, समबडी आल्सो अगेन डूइंग इट. जो 2018 का मुझे यहाँ जहाँ तक याद है कि टेरी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये देखा गया था कि 60% जो पोल्यूशन pollutants are coming from the adjacent cities of the Delhi city, capital city. So this is a very good report, I think, but I will go again further in the detail, and I have gone through it because just now I have obtained the report from Dr. Anil Kumar. And जो त्यागी साहब ने बात करी है, हमारे पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन CPCB, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि we are only concentrating in particulate matter PM 2.5. Why not to concentrate on the other parameters also? सबसे इम्पोर्टेंट चीज और है, मैंने आप बताऊं कि मैं जब स्टडी की थी COVID-19 के टाइम पे, I found every activities has closed down.
even then 50% pollution reduction was there. So ये 50% pollution कहाँ से आ रहा है? और कुछ इंडस्ट्रीज जो इलीगल तरीके से चल भी रही थी दिल्ली में, ऐसी बात नहीं, तो वो गैसियस पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकुलेट में कन्वर्शन हो रहा था, और ओजोन की मात्रा बढ़ रही थी, क्योंकि जो हमारा सनलाइट से जो सेकेंडरी प्रिकर्सर है, जो फॉर्मेशन हो जाता है ओजोन का, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। सो मैं बस इतना ही कह पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू डॉक्टर संजीव जी। एंड डेफिनेटली आपने ये कई इशू जो हमने दिल्ली आईआईटी कानपुर से जो स्टडी सोर्स अप्रोचमेंट कराई 2016 के टाइम, 15 इट इज अ पीरियड फ्रॉम 2014 टू 16, रिपोर्ट 16 में आई, तो उसमें भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन जो है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी जो है जो उसमें कन्वर्जन होता है रिजल्ट इनटू द पार्टिकुलर मैटर, और इस पे फोकस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट में भी उसमें दिया गया कि sometime around up to 20% sometime increase is in the because of the जो सेकेंडरी जो होते हैं पार्टिकल्स है, इससे होता है एरोसॉल से, और गैसियस जो है पर्टिकुलरली नॉक्स वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, नॉक्स एंड सॉक्स कन्वर्ट टू दी जो पार्टिकुलेट में, एंड इस पे फोकस आई थिंक इस रिपोर्ट में नहीं है, और बहुत सी रिपोर्ट में स्पेशली वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को वी आर नॉट मेजरिंग प्रॉपर्ली। बिल्कुल बिल्कुल, वीओसी पे हमारा तो इतना ज्यादा फोकस भी नहीं है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नहीं है दैट वाज जी। So I think these are the very very important things, and जब रिपोर्ट कोई कंबाइंड होती है, तो थैंक यू डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जो पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, और पर्टिकुलरली जो गैसेस होती हैं, और इवन जो फाइन पार्टिकल्स हैं, चाहे डीजल स्मोक हो या इसमें, तो और जो बात कह रहे हैं कि ये हमारा इस पॉसिबल कि हम जो है इस रीजन में कभी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो WHO की रिकमेंडेशंस है अचीव हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इस रीजन में, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक डस्टी रीजन है, और अभी डॉक्टर जो कल में दीपंकर शाह से बात हो रही थी, उनका भी यही फोकस है कि हमारा दूसरा एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज, जो अमेरिकन सिटीज़ हैं, उसके कंपेरिजन में जो हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो डस्टी रीजन है, तो उसमें, और अगर रोड साइड जो पर्टिकुलरली है, रोड साइड डस्ट जो होती है, उसमें बहुत फ़र्क है, बिकॉज जो हमारी जो विलेजेस की और जो इस रूरल एरिया में डस्ट है, दिस दी मे बी नॉन टॉक्सिक जो है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो भी है पार्टिकुलेट मैटर है, बट पर्टिकुलरली जो रोड रिसर्फेसिंग डस्ट है इज वेरी वेरी डेंजरस, कंटेन दी टॉक्सिक स्मोक, और ये बहुत से ऐसे जो पैरामीटर्स हैं, मिक्स हैं, जो कि उनका अगर सोर्स अप्रोचमेंट देखा जाए तो वेरी टॉक्सिक जो इसकी जो है जो कंटामिनेंट्स हैं, दे आर हार्मफुल, दो कैंसर कॉजिंग भी है, और भी पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर PM 2.5 PM 10, तो वो डेंजरस है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी किस तरह की जो डस्ट है, और जब भी हमने जो कोविड के टाइम पे भी बताया, जो संजीव अग्रवाल बता रहे थे कि ऑल एक्टिविटी बस दी है, देन तब भी हमारा जो है PM जो आपका 2.5 ये उस 25 की रेंज में आया। तो आई थिंक 5 माइक्रोग्राम तो इस रीजन में पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि हम कभी अचीव भी कर पाएंगे, बट डेफिनेटली जो रोड रिसर्फेसिंग डस्ट है, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक एमिशन से होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो है जो पॉसिबल रिडक्शन किया जाए। तो मैं इसी में डॉक्टर रविंद्र कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एरिया पे थोड़ा फोकस करते हुए आज, और इस रिपोर्ट पे बेस्ड ऑन रिपोर्ट और अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने व्यू शेयर करें। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। अभी पूरा रिपोर्ट तो आपका देखा नहीं हूँ जी। आपने जो बताया कि इसमें काफी जो सेंसिटाइज करने वाली बात है कि दिल्ली के अलावा जो दूसरे शहर हैं, जैसे आपने कटिहार और बेगूसराय, इस तरह के शहर को बात करी, वहाँ भी पोल्यूशन लेवल काफी हाई हो रहा है। ये लग रहा है कि आई थिंक कई डॉक्टर साहा का है अभी। डॉक्टर साहब आप 1 मिनट म्यूट कर लें, फिर हम आपको जस्ट रिक्वेस्ट करेंगे सर। जी जी हाँ डॉक्टर रविंद्र जी। हाँ, कुल मिला के ये लग रहा है कि ये अब जो है, कहते थे कि
जब तक मेजर नहीं करते हम लोग को पता नहीं चलता। सही बात कहा आपने। ये चीजें कोविड में भी हुई थी, जब टेस्टिंग तेज हो जाती थी तो वो कोविड के जो रेट्स हैं वो काफी आ जाते थे, और टेस्टिंग जैसे ही दिल्ली सरकार कम कर देती थी तो हमें लगता था कि वो कोविड कम हो गया। सिमिलर चीज इसमें भी अप्लाई हो रही है कि जब टेस्टिंग के सेंटर्स आप बढ़ा रहे हैं, जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको फिर रियली में जो पैरामीटर्स हैं वो सारी चीजें निकल के आती हैं। और जैसे आपने कहा कि रोड डस्ट की बात करी, रोड डस्ट तो एक अपने आप में ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, अ, जो कि सिटी के ओवरऑल जो सोर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सोर्स, जहाँ से रोड डस्ट लार्जली जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रोड डस्ट के अलावा हमारे पास और भी है, रोड बिल्डिंग मटेरियल्स है, ग्रेवल है, कंक्रीट है, जो जैसी तेजी से जब गाड़ियां चलती है तो टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस के चलते भी डिस्टरबेंस होती है, उसके चलते भी रोड डस्ट जनरेट होता है। जहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा रोड मतलब हैवी वेट आ रही है रोड पे, वहाँ वियर एंड टीयर भी बहुत हाई होता है, जिसके चलते भी काफ़ी चीज़ें जनरेट होती है, पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो नीरी की एक स्टडी ने पाया है कि अराउंड जो है 71% पार्टिकुलेट मैटर मुंबई की कह रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा कि 71% पार्टिकुलेट मैटर है मुंबई में, और 45% जो है अनपेव्ड रोड से आते हैं। अनपेव्ड रोड मतलब जिसपे हमने पेविंग नहीं करी है, कच्चे सड़क है, इस तरह के कंडीशन में बहुत सीरियस इशू है कि अगर सड़क कच्ची सड़क है और खासकर खेतों में जा रही है या ट्रैक्टर चल रहे हैं, इस तरह की जहाँ पे सड़क है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि सिटी डस्ट जो है 26% कंट्रीब्यूट करता है। तो सिटी में जो डस्ट है वो भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें 8% जो है पार्टिकुलेट इमिशंस जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए है, 3% व्हीकल के लिए। बाकी जो डस्ट है इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक सेक्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, मेरीन वेसल्स है, और बेकरीज है, क्रिमेटोरियम है, वहाँ से भी डस्ट आते हैं। तो इस तरह के कई सोर्सेस हैं, और सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी होते रहती है, लेकिन जो रोड डस्ट है उसमें दो तरह की मतलब कैटेगरी हम बांट सकते हैं। एक तो पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड। इसमें पेव्ड रोड जो है थोड़ा कम होता है। अनपेव्ड रोड जैसे अगर 31% टोटल मुंबई में उन्होंने स्टडी करी है, 31% में उन्होंने पाया कि 12% पेव रोड से है और 18% अनपेव रोड से है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जहाँ जहाँ हमारे पास अनपेव रोड है, खासकर वहाँ रोड डस्ट की समस्या ज़्यादा है, और काफ़ी चीज़ें जो है हमारे जो ये इस पे अगर हम कंट्रोल करें पेव रोड को और अनपेव रोड को, तो अनपेव रोड पे हमें बहुत ज़्यादा स्प्रिंकलिंग और केयर की ज़रूरत है। और पेव रोड में फिर भी हम लोग दिल्ली में काफ़ी चीज़ें पेव रोड पे भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो टायर और व्हीकल का इंटरेक्शन हो रहा है उसके चलते जो डस्ट इमिशंस है वो काफ़ी मात्रा में, साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के चलते भी जो है रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, उसके चलते भी काफ़ी डस्ट आता है। तो ओवरऑल ये चीज़ हम कह सकते हैं कि अगर ट्रैफिक को जो भी कॉरिडोर बन रहे हैं उसके साथ में अगर हम ब्लैक टॉपिंग प्रॉपरली करें, और रोड शोल्डर्स जो होते हैं हमारे पास, जो रोड शोल्डर्स हैं वो वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी डस्ट होता है। और इसके अलावा जो मटेरियल है, खासकर कूड़े करकट और जो हमारी डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, उसके चलते भी जो है काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग करें। मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, लेकिन अब किस लेवल तक इम्प्लीमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क भी बहुत बड़ा है और इसमें एमसीडी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओवरऑल देखें तो जो कंसंट्रेशन होता है मेनली जो रोड्स जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा होगा नेचुरली है, और अगर उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन इस तरह से है कि वहाँ अगल बगल में प्लेन एरिया भी ज़्यादा हो, में भी वहाँ पे रोड डस्ट और ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस है। और इसमें हमें जो है
ये देखना है कि कैसे इस चीज को रोकें और लैंडफिल फायर को हम कैसे कम कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हमारा जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल मैं अभी रिपोर्ट पढ़ा नहीं हूँ, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं कुछ और बता पाऊंगा। जी अभी मोटा मोटी मैं यही समझ रहा हूँ कि रोड डस्ट का कंट्रीब्यूशन है, साथ साथ जो कच्ची सड़क है, खासकर अगल बगल में कच्ची सड़क, और जो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है, उसके चलते भी हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ। यही मैं कहना। जी, थैंक यू डॉक्टर रविंदर। आई थिंक हम एक फर्दर सेशन नेक्स्ट संडे भी इसी पे, बिकॉज बहुत से लोगों ने मेरी रिपोर्ट भी मैं आज ही भेज पाया, तो इसलिए बहुत लोगों ने इस रिपोर्ट पे दे आर नॉट गॉन थ्रू, तो मैं इसको फर्दर जो है एक नेक्स्ट सेशन जो है इस पे रखेंगे, फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर रविंदर। डेफिनेटली हम इसको फर्दर वी कैन नेक्स्ट संडे डिस्कस फर्दर विद यू, जो आपके साथ जो है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर Sir, with दीपांकर your शाह जी। permission, just I just want to tell, रविंद्र जी की बात बिल्कुल ठीक बोली उन्होंने कि दिल्ली के अंदर जो है रोड डस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है, और 42% कंट्रीब्यूशन जो है रोड डस्ट से हुआ करता था जब हमने असेसमेंट किया। तो दिल्ली में मतलब ऑलमोस्ट बॉम्बे के मुकाबले दिल्ली में भी सेम हालत है। वहाँ 45% था, यहाँ 42% है, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट पोल्यूशन के लिए। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर साजिद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दीपांकर साहा, जो सीपीसीबी में इस एयर पोल्यूशन पे इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया हम लोगों के साथ। हम लोग जब ज्वाइंटली स्मोक की कंडीशंस और बहुत सी कंडीशंस होती थी, डॉक्टर साहा के साथ बहुत काम किया, और ये ऑल ओवर इंडिया पे इन्होंने काफ़ी जो है एयर पोल्यूशन लैब और इसमें बहुत काफ़ी फोकस किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दीपांकर साहा से कि इस रिपोर्ट और अपने व्यू एक्सप्रेस करें। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने बहुत अच्छी टॉपिक पर और अच्छी सीजन पर वेरी टाइमली discussion point is at place, for which I must congratulate the entire team. Now the thing is that if you go through the definition of air pollution, that nowhere the particulate matter is in place. The constituent does not describe the availability of particulate matter in the air pollution, in air components particularly. And any intrusion of particulate matter or the gaseous matter into the environment is considered as air pollution. Now the thing is that the reports, though I have not really read that entire report, and but as I presume, that must be depicting the Indo-Gangetic Plain towns and villages and results for which we have started monitoring. If we have more monitoring stations, the more things will come up in front of us, and that means that wherever the measurement is there, all the cities are problematic. It means there is something wrong in the air pollution aspects, particularly in the Indo-Gangetic Plain, South Asian region, where the rainfall is limited, restricted to maximum 50 days in a year. 50 days in a year, and throughout the year we don't have rain. And the report, the comparison of the report, if it is not the meteorologically uniform, if it is not the human density is uniform, if it is not as per the required desert land use pattern, such comparison has no value, scientific value. It is my personal thing, and gradually trying to convince people that this is not the correct thing. Now the number two is the PM 2.5. We have prescribed the PM 2.5 mass. Again, there is a confusion in this thing. The PM 2.5 also contributes the crystal material, the non-reactive material also, and how these are having the similar impact even in the US and India. Or this is not really a question. This is again a question mark. Now the aerosol, whatever with the new scientific terminology you have given, the total PM 2.5 is considered, even the PM 10 is considered as aerosol. That is also a misnomer.
we should see the scientific lecture, the scientific definition of aerosol. It talks about the micro-sized gaseous or the chemical components. It does not include the crustal material or the crystal material or the soluble material. It is don't describe all these things. So all these things, until and unless we are able to bifurcate and divide into the anthropogenic or the biogenic sources and the anthropogenic sources, it don't have any scientific merit. This again I will say. Now the contribution, whenever it comes to the contribution, people are all aware. Lot of scientific studies are being carried out. Source assessment speaks of only 6 major sectors, and we are aware. That means the problem is that our soil is in the air. That means we have failed to maintain our soil. That is the land use pattern. We have failed to maintain our soil. Number 2 issue is the garbage. Again, we have failed to manage our garbage. That's why we are getting all these components in the air constituents or substituents or the source assessment studies. Now the construction activities, again it is 30%, whatever is the percentage varies with the season. And people talk about the average concentration throughout the year, but that is also not a scientific. Which month, what is the contribution, that is most important, because its seasonal variation is there. Until and unless we are in a position to tell which month the contribution is what, that is important for us. Now I am trying to do that analysis, which month the contribution is varies and what is the natural reasons for that particular variation. That is required to be understood, and that is required to be told to all. And until unless we are able to educate our people, particularly the press and media, this hue and cry was there. We started in 2010 and 11 when I was with the Central Pollution Control Board, and again it is still continuing. And every year the same story is going on, and nobody is resisting that for what it is causing. It does not mean that the pollutants are increasing in a season, particularly in winter it is increasing. No, in a defined city or area, the emission load remains same. It is the meteorology that causes us, puts us in different situation. अगर हम मेट्रोलॉजी को साथ में ना लेके बोलें, अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन को साथ में ना लेके बोलें, अगर हम really the toxic components, crustal components, all this some segregate करके ना बोले, this situation will continue to tell. As Anil ji ने बताया था, Anil ji, I am in a reunion today, so next week, if you permit me, I will 10-15 slides. I will make the presentation, and I will tell why this is happening. That is most important for us. And what is science says as on date, that is required to be understood by all. Thank you so much. Thank you, sir. I know you are in some other meeting, so thank you so much for joining. It's not a meeting. It is a 104th reunion of my university. So I am here. Please, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So definitely, जैसा कि डॉक्टर साहा ने बताया कि हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा जो उसका कॉन्स्टिट्यूंट सब भी जो भी PM 2.5 का है या PM 10 का इज वेरी इम्पोर्टेंट. Not only कि as a whole like mass you can take, but whatever the different constituents, how it is constituted, that particular matter, uska is very important, and we have to consider that, and toxicity uski kitni hai, because this is a very very important jo constituents hain that make the difference in the health impact actually. So thank you, Dr. Saha. So now we have just 15 minutes, though we will continue with continue our meeting on this subject. So मैं खंडेलवाल जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप आज प्रदीप खंडेलवाल जी, you want to make any comment on today? नहीं, मैं आज अरुण जी से बात कर लीजिए, जो कनेक्शन आज अच्छा ठीक है कट रहा है. चलिए
इसको नेक्स्ट में अरुण जब कुमार जी आपका हैं, होगा तो question? डेफिनेटली। और मैं हाँ। अरुण जी वांट टू से एनीथिंग सर? सर जहां मैं बैठा हूं वहां सिग्नल कम है, जी तो जी शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। तो चलिए कोई नेक्स्ट नहीं, वाली मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है ठीक, बिकॉज आपका जो आप लोगों ने म्यूनिसिपल जो उसमें और इसका जो वेस्ट का है, चाहे लैंडफिल है या लैंडफिल फायर है या और जो मटेरियल है सीएनडी वेस्ट, अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है पर्टिकुलरली PM10 में और सम पार्ट ऑफ द PM2.5। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों में से कोई नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मीटिंग में इफ यू कैन से मेक सम कमेंट्स, तो आप इस रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट में जो डेटा यूज किया है, जो मेथोलॉजी यूज की है, मॉडलिंग यूज किया है एंड आपका एक्सपोजर है उसके बेसिस पे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज त्यागी जी से कि व्हाट इज व्यू, बिकॉज उन्होंने शायद रिपोर्ट को थोड़ा देख पाए हो, और नहीं तो वैसे भी जस्ट अगर उनका क्या व्यू है ऑन दिस टॉपिक। नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। हाँ थोड़ी कम है, अगर काउंट क्लोज बहुत कुछ ऐसे कम, कर सकते हैं। बहुत कम आ रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है, नीरज जी की आवाज। अच्छा, अब ठीक आ रही होगी? हाँ बिल्कुल आप सही आ रही है जी। जी जी जी। अब आप माइक के साथ आ गए, माइक लगा हुआ फोटो में सामने। जी जी जी। वो ये जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, अभी हम इसको फोकस कर रहे थे दिल्ली और इसके आसपास। मैं समझता हूँ ये साउथ एशिया के लिए है। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, and the report details how persisting with policies currently being implemented largely since 2018. तो इसमें एयर शेड्स के ऊपर है। एयर शेड जिसमें 6 लार्ज एयर शेड्स हैं जो साउथ एशिया में हैं, जैसे कि वेस्ट, जिसमें वेयर द एयर क्वालिटी इन वन कैन अफेक्ट द एयर क्वालिटी इन अनदर, एंड दे आर वेस्ट सेंट्रल इंडो गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल ईस्टर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बांग्लादेश भी है। मिडिल इंडिया में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। मिडिल इंडिया में ईस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है। नॉर्दर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन में पाकिस्तान है, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है, एंड साउदर्न इंडस प्लेन एंड फर्दर वेस्ट में है साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न ईरान आल्सो। तो जो देखा गया है कि व्हेन द विंड डायरेक्शन वाज प्रीडोमिनेटली नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, 30% of the air pollution in Indian Punjab, came from the Punjab province in Pakistan. And on average, 30% of the air pollution in the largest cities of Bangladesh, जैसे कि ढाका, चिटगांव and Khulna, these originated from India. In some years, substantial pollution flowed in the other direction across borders. तो जो exposure of PM2.5 है, currently over 60% of South Asians are exposed to an average 35 microgram per cubic meter of PM2.5 annually, and in some parts of the Indo-Gangetic plain, it is spiked to as much as 100 microgram per cubic meter. And this is nearly 20 times the upper limit of 5 microgram per cubic meter recommended by the World Health Organization. और इसमें जो डोमिनेंट सोर्सेज हैं वो लार्ज इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, these are dominant sources, but in South Asia other sources also make substantial additional contributions. These are combustion of solid fuels for cooking and heating, emission from small industries such as brick kilns, burning of municipal and agricultural waste, and cremation also. अब ये जो एयर शेड, वर्ल्ड बैंक डिफाइंस एन एयर शेड एज ए कॉमन ज्योग्राफिक एरिया वेयर पॉल्यूटेंट्स गेट ट्रैप्ड, creating similar air quality for everyone. Government measures can reduce particulate matter, but significant reduction in air sheds require coordinated policy. Actual में जो हमें requirement है वो coordination का है, और this coordination should be across all the air sheds in Delhi, NCR, where to fully implement all air pollution control measures by 2030,
while other parts of South Asia continued to follow current policy, it would not keep pollution exposure below 35 microgram per cubic meter. However, if other parts of South Asia also adopted all feasible measures, it would bring pollution below that number. तो हमें जो cooperation है दूसरे countries से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, इसमें South Asian जो countries है including India, they need to change their approach in order to improve air quality and reduce pollutants to levels considered accepted by the WHO. Close coordination किस तरह का, जैसे कि curbing air pollution requires not only tackling its specific sources, but also close coordination across local and national jurisdictional boundaries. And regional cooperation can help implement cost-effective joint strategies that leverage the interdependent nature of air quality. The most cost-effective one, which calls for full coordination between airsheds, would cut the average exposure of PM 2.5 in South Asia to 30 microgram per cubic meter at a cost, at very minimum cost, and it will be reduced exposure and save more than 7,50,000 lives annually. जो related steps हैं हमारे, जैसे हमने national clean air campaign चलाया हुआ है, launched in 2019. It aims to reduce air pollution in 131 of India's most polluted cities. The target was initially to cut pollution by 20% to 30% by 2024 over 2017 levels, but अब इसको revise कर दिया गया है, and now has been revised to cutting it by 40% by 2025-26. सफर है एक हमारा, सफर is a national initiative introduced by Ministry of Earth Sciences to measure the air quality of a metropolitan city by measuring the overall pollution level and the location specific air quality of the city. And it is an integral part of India's first air quality early warning system operational in Delhi. It monitors all weather parameters, temperature, rainfall, humidity, wind speed, wind direction, ultraviolet radiation, and solar radiation. The World Meteorological Organization has recognized SAFAR as a prototype activity on the basis of the high quality control and standards maintained in its implementation. AQI का concept है. AQI has been developed for 8 pollutants: PM 2.5, PM 10, ammonia, lead, nitrogen oxide, sulfur dioxide, ozone, and carbon monoxide. और उसके अलावा हमारा graded response action plan हमने adopt किया हुआ है. जो EPCA है उसने डायरेक्ट किया था, दिल्ली has directed Delhi and neighboring states to implement air pollution control measures under very poor and severe category air quality of the graded response action plan from 15th October 2020. अब दिल्ली में जो हमारा विंटर पॉल्यूशन होता है उसमें मेनली हम स्टेबल बर्निंग की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा भी है, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम. The southward shift of subtropical jet stream happens, causing a westward wind pattern in the northern part of India and thus spread of pollutants. इसके अलावा है stagnant lower level winds. As the winter season sets in, dust particles and pollutants in the air become unable to move due to stagnant lower level winds. Pollutants get locked in the air and affect weather conditions also, and hence resulting in smog formation. तो जो EPCA हमारी, it was notified in 1998, and EPCA is a Supreme Court mandated body tasked with taking various measures to tackle air pollution in NCR. इसके लिए BS6 vehicles push for electrical vehicles शुरू हो गया है दिल्ली में भी. Odd even policy पहले लागू की गई थी. New commission for air quality management, subsidy to farmers for buying turbo happy seeder machine. ये सब्सिडी का भी एक सिस्टम हम अडॉप्ट किया है for reducing stubble burning, THS. नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है अंडर NAMP. 4 air pollutants, sulfur dioxide, NO2, PM10 and PM 2.5 have been identified for regular monitoring at all locations.
और इसके अलावा मैं कहूंगा फ्यूरांस का भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से एमिशन होता है। और सेंटर ने 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, NCAP। दिस एम्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन 131 ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। ये प्रोग्राम बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको रिव्यू किया जाए। द रिपोर्ट एनालाइज मल्टीपल सिनेरियोज, और जो एंड में जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं यही कहूंगा कि गिवन द फाइंडिंग्स वी बिलीव that scientists of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and other South Asian countries must establish a dialogue on air pollution to tackle it with an airshed approach, and this is how the problem has been tackled in other regions also. ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, थैंक यू नीरज जी। आपने रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, एंड आई नो दैट कि हमें बहुत टाइम नहीं मिला, तो हमारे जो अदर आज एक्सपर्ट्स भी बहुत लोग नहीं जुड़ पाए, उन्होंने कहा था आज नहीं ज्वाइन कर पाए। सो इस टॉपिक को नेक्स्ट संडे के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे, और जिसको भी थोड़ा भी टाइम मिल पाए तो देखें, बिकॉज दिस इज ए बिग रिपोर्ट, काफ़ी वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है। इसमें डिफरेंट सोर्सेस का और उसके ग्राफिकल भी और सब कंट्रीब्यूशंस और बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट संडे हमारे अदर एक्सपर्ट के साथ इसको हम और देखेंगे इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो नाउ टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू बी 12:57 हो गया। मैं बस 1-2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा त्यागी सर से, पार्थोस त्यागी सर से, कि आज के अगर पॉइंट्स एक दो चीज़ें पे हैं जो उनको लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो उन्होंने पहले इनिशियल रिमार्क्स में बताया हुआ है, बट मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए जस्ट टू आज के 1-2 मिनट में वी कैन समराइज, and so and further will continue next Sunday also. So over to Parthos Tyagi sir to just to summarize that. Thank you again. I think discussions were very relevant, and I found Mr. Saha and Neeraj Tyagi expressing not only information but also suggestions that must be followed. And I cannot take up the responsibility of noting down these points and sending it to you. You are just oral, but if you have a teamwork, then someone should be noting down action points, particularly actions to be taken by this group. हमारे सर डॉक्टर संचिता आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, डॉक्टर केके अग्रवाल से एवरी टाइम डॉक्टर संचिता इस पर्पस वो पूरा उसको समराइज करती हैं एंड पॉइंट्स को, और आज ज्वाइन नहीं कर पाई, बट उनको रिकॉर्डिंग उनके पास रिकॉर्डिंग से ही समराइजिंग दैट वे। जी जी, थैंक यू सर, गिविंग मी डबल ऑनर। थैंक यू सर, एंड डेफिनेटली जो आपकी ब्लेसिंग और हमारे अदर एक्सपर्ट मेंबर्स का, सो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं जो डॉक्टर केके अग्रवाल की लेगेसी थी उसको, जो है बिकॉज उनका यही था लास्ट वर्ड। हम कल हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे उनका फोटो के साथ, तो ये लग रहा था वहाँ पे कि वो सामने देख रहे हैं प्रोग्राम को और सामने हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो उनको जहाँ पे भी है उनके जो वहाँ वाइब्रेशन लग रहा था कि उनके जो है वो फील हो रहे हैं, उनके जो है तो एनर्जी ही फील हो रही थी। उनकी बड़ी फोटो लगी थी वहीं स्टेज पे साथ में उनके, तो वो तो ऐसे पर्सन थे। तो आई थिंक आप सबकी ब्लेसिंग से उस जो सो बस गो ऑन जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो हो रहा है, और इसको हम कोशिश करते रहेंगे कि आप सब लोग एफर्ट से कंटिन्यू रहे ये, और हम लोग भी जो सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट कर पाए तो डेफिनेटली करते रहेंगे। इन्हीं के साथ आज का ये प्रोग्राम जो डॉक्टर KK HCFI का जो राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट है आज के सब्जेक्ट पे, हम यहीं से इसको खत्म करते हैं। इसी टॉपिक को नेक्स्ट संडे विल कंटिन्यू विद आवर एक्सपर्ट मेंबर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।